Hello students, welcome to our current affair class. In this class we will discuss some important current affairs. So आज की क्लास में हम 2 अगस्त 2024 के कुछ important current affairs discuss करेंगे which are very important for any exam point of view. So let's start the class. In this session और आज के current affair के session में we will cover first some important national news. So first we will discuss some important national news, then we will discuss some important international news. We will also discuss some banking and financial news. Then economical and business news. We will also discuss some news related to the recently appointment and resignation. Also acquiescing and mergers, अधिग्रहण और विलय से related we will discuss some important points. Also we will discuss some sports news, some important days, some state news and some awards and recognition. So ये आज के टॉपिक्स होने वाले हैं हमारे, या इस तरह की न्यूज़ेस अलग अलग सेक्शंस में हम डिवाइड करके डिस्कस करेंगे. The images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में इस्तेमाल की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं. हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं. यदि आप इस डेक में इस्तेमाल की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे. So let's start our today's current affairs with our first national news. तो आज पहली नेशनल न्यूज डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द न्यूज? द यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च NATS 2.0 पोर्टल. वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टल. पोर्टल का नाम क्या होगा? NATS 2.0. What is the meaning of NATS? NATS means National Apprenticeship and Training Scheme. सो बेसिकली पहले भी ये पोर्टल लॉन्च हो चुका है, तो इसका सेकेंड वर्जन लॉन्च किया या अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया विच इज NATS 2.0 पोर्टल. दिस बर्स RS 100 करोड़ स्टाइफंड. सो अगर मैं वन लाइनर में बात करूं तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इस पोर्टल को लॉन्च किया जिसके थ्रू जो लोग बेसिकली वोकेशनल ट्रेनिंग, अप्रेंटिस या फिर बेसिकली जॉब ट्रेनिंग किसी भी IT सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जॉब ट्रेनिंग लेते हैं तो ये उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा. स्टाइफन की तरह बेसिकली इस स्कीम के थ्रू उन्हें पैसा मिलेगा. सो ऑन जुलाई 30, 2024, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, विच इज बेसिकली मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, लॉन्च द नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम 2.0 पोर्टल इन न्यू दिल्ली. इस पोर्टल और इस इनिशिएटिव के अंदर द गवर्नमेंट विल स्पेंड अप्रोक्स 100 करोड़ स्टाइफन विच विल डिसबर्स टू द यंगर ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. किसके थ्रू ट्रांसफर होगा? ये सीधा DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू बेसिकली उनके अकाउंट में जाएगा. ओके, ये किस किस सेक्टर्स में अगर लोग अप्रेंटिस कर रहे हैं या ट्रेनिंग ले रहे हैं तो अप्रेंटिस आर रिसीव ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन सेक्टर लाइक IT सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. क्लियर? सो हमने न्यूज डिस्कस की है कि कौन सा पोर्टल किसने लॉन्च किया. थोड़ा सा इस पोर्टल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. बेसिकली हु स्टार्टेड द पोर्टल और हु डेवलप्ड द पोर्टल और सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू NATS 2.0 पोर्टल. फर्स्ट, इट इज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू इसे डेवलप किया गया विद द सपोर्ट ऑफ AICTE एंड बोर्ड. So it is developed by the combined venture of Ministry of Education, AICTE and board. It manages apprenticeship life cycle activities such as student registration, vacancy advertisement, student application, contract creation, certification reporting, and stipend disbursement using DBT. And what is the aim of this portal? Aim to democratize apprenticeship opportunities, bridge skill gaps, and prepare youth for future career. It also recognized by top industries including Cognizant, Infosys, and Tech Mahindra, etc. So here are some points related to the Ministry of Education. तो कुछ points देख लेते हैं एक बार Ministry of Education से related.
Who is the Union Minister of Ministry of Education? Dharmendra Pradhan, and the Lok Sabha constituency is in Sambalpur, Odisha. Education Minister for his state is Shukanta Majumdar, and his constituency is in West Bengal. And independent charge, Jain Chaudhary, he is a Rajya Sabha member from Uttar Pradesh constituency. Clear? Okay. Now let's move to our next news, which is also a national news. Ministry of Defense signed a memorandum of understanding with UPEIDA. UPEIDA मतलब Uttar Pradesh Expressway Industrial Development Authority to establish 3 testing facilities in the Uttar Pradesh. So अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यूपीईआईडीए के साथ या उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ एक एमओयू, एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अंदर वो 3 टेस्टिंग फैसिलिटीज एस्टेब्लिश करेंगे इन उत्तर प्रदेश. So they will establish 3 state-of-the-art testing facilities in Uttar Pradesh under the Defense Testing Infrastructure Scheme known as DTIS. और ये जो फैसिलिटीज होंगी किस किस चीज पे फोकस करेंगी? दीज फैसिलिटीज विच फोकस ऑन अनमैन्ड एरियल सिस्टम नोन एज यूएएस, मैकेनिकल एंड मटेरियल सिस्टम एंड एज कम्युनिकेशन एज वेल एज. तो मानव रहित हवाई प्रणाली पे जोर देंगी, यांत्रिक एवं सामग्री और संचार पर केंद्रित. सो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इन टेस्ट फैसिलिटी से रिलेटेड. एक फैसिलिटी स्टैब्लिश की जाएगी इन लखनऊ फॉर एमएनएम. 2 फैसिलिटीज एस्टेब्लिश की जाएंगी इन कानपुर फॉर यूए सिस्टम एंड कम्युनिकेशन. लीड मेंबर्स इंक्लूड मिधानी फॉर एमएनएम, हॉल फॉर यूएएस एंड बेल फॉर कम्युनिकेशन. तो यहाँ पर जो मेंबर्स होंगे, जो कंपनीज मेंबरशिप होंगी अलग अलग क्राइटेरिया में, वो मिधानी, हॉल और बेल कंपनी. So some points related to the Ministry of Defense. So who is the Defense Minister in India? So Rajnath Singh is the Defense Minister and his constituency is in Lucknow, Uttar Pradesh. And Ministry of State, Sanjay Seth, who is Lok Sabha member and his constituency is in Ranchi, Jharkhand. Clear? चलो, so आगे डिस्कस करते हैं. Next is also a national news. India ranks second largest aluminium producer in the world. So हुआ क्या है, वर्ल्ड में भारत एल्यूमिनियम का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट बन गया. We are discussing about second, which basically country is the first largest aluminium producer in the world. So China. So after China, India became the largest aluminium producer in the world. So India has become a major player in the global mineral production industry. The country is now at the second position in the production of aluminium, third largest of lime, and the fourth largest producer of iron ore in the world. So apart of aluminium, India is the third largest producer of the lime and the fourth largest producer of iron ore. These rankings show India's growing importance in the global mineral sector. Clear? The second largest aluminium producer in the world, and first is China. Next is national news. Introduction of electronic human resource management system. So recently Union Minister Dr. Jitendra Singh ने अभी राज्य सभा में अनाउंसमेंट किया कि यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ न्यू electronic human resource management system, and basically which will manage the government employee service matter more efficient through digital means. So who introduced electronic human resource management system? The union government has introduced the electronic human resource management system. And what is the major purpose of this system known as EHRMS system? Basically the management of the government employee services matters. Basically it manage the government employee service matter more efficient through digital medium or digital means. Clear? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि किसने लॉन्च किया है या क्या इसका पर्पस है. नेक्स्ट इज ऑल्सो अ नेशनल न्यूज. राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 एंड द पर्पस इज टू प्रमोटिंग साइंटिफिक रिसर्च इन हिंदी. सो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन वाज हेल्ड इन जुलाई 30-31 इन भोपाल. तो कहां पर सेलिब्रेट किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इट वाज बेसिकली कंडक्टेड इन भोपाल. So what is the purpose of राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन? Simply through the name we can understand, हम नाम से समझ सकते हैं कि हिंदी के रिसर्च को
प्रमोट करना इसका प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव था या एम था. This conference aimed to promote scientific research in Hindi, and it was organized by the Council of Scientific Industrial Research, Advanced Matters and Process Research Institute, known as CSIR AMPRI, along with other institute like Vijna Bharati, Madhya Pradesh Province, Madhya Pradesh Council of Science and Technology, Madhya Pradesh Bhoj Open University, CSIR National Institute of Science, Communication and Policy Research, and Atal Bihari Vajpayee Hindu University. So बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने साथ मिलके इसे बेसिकली लॉन्च किया, बट प्राइमरली ये किसके थ्रू स्टार्ट किया गया है? CSIR AMPRI. और कहां पर लॉन्च किया गया? इन भोपाल. सिंपल. तो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 was held in Bhopal. Now we have discussed important national news. Now we will discuss some important international news. So let's start. India elected as Vice Chair of Supply Chain Council in IPEF initiative. What is IPEF? Indo-Pacific Economical Framework for Prosperity. So India has been elected as the Vice Chair of the Supply Chain Council under the Indo-Pacific Framework for Prosperity. Before India, United States was elected as the chairman, और basically United States को अध्यक्ष चुना गया है, इंडिया को Vice Chairman of the Supply Chain Council. The election took place during the inaugural virtual meeting of SCC, Crisis Response Network and Labor Right Advisory Board, which was conducted on July 30, 2024. तो basically election होने के बाद ये decision लिया गया है. Here are some points related to the Indo-Pacific Economical Framework. What is IPEF? It was launched on 23rd of May 2022 in Tokyo, Japan, and there are 14 included members, including Australia, Brunei, Fiji, India, Indonesia, Japan, Republic of Korea, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, and the USA. तो ये कंट्रीज के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा IPEF का मेंबर है या मेंबर नहीं है. And when it was launched in Tokyo, Japan in May 23, 2020. Clear? Next is also international news. G20 agree on Brazil billionaire tax proposal to tackle taxation on ultra rich. तो G20 ने क्या किया? जो अति धनवानों पर कर लगाने के लिए ब्राजील के अरबपति का जो प्रस्ताव पारित हुआ था, उस पर G20 में सहमति बन गई है. तो the G20 financial minister and central bank issue the first ever joint ministerial declaration on taxation, known as the Rio de Janeiro G20 Ministerial Declaration on International Tax Corporation. This declaration basically commit to effect taxation on ultra high net worth individual. Brazil hold the G20 presidency for 2024. World richest billionaire, making it a priority for the upcoming G20 summit in November 2024. Clear? Next is banking and financial report. So recently RBI issued a report on currency and finance for 2023-2024. सो आरबीआई ने एक बेसिकली करेंसी और फाइनेंस के ऊपर 2023 की रिपोर्ट जारी की है. नाउ एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं. फर्स्ट तो हमें थीम पता होनी चाहिए. व्हाट इज द थीम फॉर RCF, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस? द थीम इज इंडियाज डिजिटल रेवोल्यूशन. तो अंडर द थीम इंडियाज डिजिटल रेवोल्यूशन, आरबीआई इशू द रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस फॉर 2023 and 2024. Basically, this report highlights the challenges posed by the rapid adoption of digital technologies in the financial sector. तो ये क्या एक्सप्लेन करती है कि वित्तीय क्षेत्र में जो डिजिटल फाइनेंशियल या डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो तेजी से बढ़ी हैं, उनको लेकर क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसके ऊपर ये बेसिकली एक्सप्लेन करती है. Now there are some key points related to this report. According to this report, India digital economy is currently 10% of the GDP. तो जो भारत की डिजिटल इकोनॉमी है वो ओवरऑल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की 10% है, और ये 2026 तक इंक्रीज हो जाएगी, डबल हो जाएगी बाय 2026. कितनी हो जाएगी डबल होकर? 20%.
Also, according to this report, digital payment have seen a CAGR of 50% in the volume and 10% in volume term over the last 7 years. Most important data है कि basically क्या है, 50% in the volume and 10% in the value term. India is expected to be the world leading supplier of the labor, increasing remittance to around USD 160 billion by 2029. तो क्या होगा 2029 तक? भारत जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा श्रम का अग्नि आपूर्तिकार बनने जा रहा है, बेसिकली, या सप्लायर बनने जा रहा है ऑफ लेबर. So this report is released by RBI. So here are some points related to the Reserve Bank of India. Where is the headquarter of Reserve Bank? The headquarter of the Reserve Bank is in Mumbai, Maharashtra. And presently, Shaktikant Das is the 25th governor of RBI. Clear? Let's move to the next news, which is also related to the banking and finance. Recently, Security and Exchange Board of India launched first web portal for passive fund at National Stock Exchange, unveil report on the capital market. So on July 30, 2024, SEBI chairman Madhavi Puri Beach launched India's first website for passive fund at the National Stock Exchange. Who is the chairman of SEBI? Madhavi Puri Beach. This platform aimed to facilitate retail investor access to information and understanding of the Indian passive industry. SEBI also unveiled a report on capital market title known as Indian Capital Market: Transformative Shifts Achieved Through Technology and Reforms. So basically, this is the organization SEBI. SEBI क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर कंट्रोल रखती है. तो उसी ने अपनी फर्स्ट वेब पोर्टल फॉर पैसिव फंड NSE रिपोर्ट जारी की. Here are some points related to the Security and Exchange Board of India. It was established in 1992 in Mumbai, and the chairman is Madhavi Puri Beach. Clear? Next is banking and finance. Insurance देखो enter into reinsurance broking sector with composite license. So अभी क्या हुआ है? IRDAI. What is IRDAI? Insurance Regulatory and Development Authority of India. So IRDAI is a responsible body to control insurance industry in India. सो ईडर के पास पावर है, वो किसी भी कंपनी को बेसिकली इंश्योरेंस के लिए लाइसेंस प्रोवाइड कर सकती है. तो अभी इंश्योरेंस देखो को ईडर ने अलाउ कर दिया है कि वो री इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है. तो इंश्योरेंस देखो, इट इज अ गुड़गांव बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, हैज रिसीव अ कंपोजिट इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस फ्रॉम द IRDAI, Insurance Regulatory and Development Authority of India. This license allows the firm to offer reinsurance broking services alongside its existing insurance broking offering. Clear? Also, here are some points related to the insurance. देखो, reinsurance broking sector. What is the major purpose of this reinsurance broking sector with composite license? So it aimed to enhance insurance penetration in India through deep distributing networks and digitalization. It expected to expand contribution margins and increase EBITDA margin. विजन इंक्लूड रीचिंग 6 लाख विलेज अक्रॉस इंडिया. तो 6 लाख गांवों तक पहुंचना है. उसके साथ साथ डायरेक्ट इंटीग्रेशन विद 48 इंश्योरेंस कंपनीज ऑफरिंग ओवर 630 इंश्योरेंस प्रोडक्ट and process around 3,300 crore in premium for insurance company in financial year 2024, and for financial year 2025 the expected target is 5,000 crore. Next is economic and business news. So recently INDRA, what is INDRA? INDRA is a India Rating and Research Organization, raise Indian GDP for financial year 2025 at 7.5%. Means according to India Rating and Research, the Indian GDP will be 7.5% for financial year 2025. जो पहले इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च ने 7.1% एस्टीमेट बेसिकली कंडक्ट की थी. तो अब इसने क्या किया? इंक्रीज किया है, रेज किया है. पहले रिलीज किया था डेटा, उसके अकॉर्डिंग द इंडियन जीडीपी विल बी 7.5%, बट नाउ according to latest report it will be around 7.5%. The projection exceed the RBI expectation of 7.2% and the Ministry of Finance expectation 6.5 to 7%. तो RBI के अकॉर्डिंग कितनी रहने वाली है? 7.2, एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू ये 6.5 से 7% रहेगी.
Clear? So here are some points related to Indian Rating and Research Institute. First, let's understand some highlights. The gross fish capital formation is expected to increase by 8.9% year on year in financial year 2025, according to INDRA, basically organization. Government financial consumption expenditure is expected to grow 4.4% in financial year 2025. So India's Rating and Research Organization, the chairman is Rohit Karan Sahani. The headquarters is in Mumbai, Maharashtra, and it was established in 1995. Clear? Next news is related to the appointment and resignation, basically. The former Union Health Secretary Preeti Sudan took charge as the chairperson of UPSC. So यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की अभी चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? प्रीति सुडान को. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर कैन डायरेक्टली आस्क दैट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी. So on August 1st, 2024, Preeti Sudan, who was the former secretary of Ministry of Health and Family Welfare, took oath as the new chairman of the Union Public Service Commission. So ये अप्रैल 2025 से बेसिकली अपनी पोस्ट को होल्ड करेंगी. She is the second woman to head the UPSC after RM Bathyu. The first woman कौन थी? RM Bathyu थी. अब ये सेकेंड लेडी बनी है जिन्होंने इस पोस्ट को होल्ड किया है. So here are some points related to Preeti Sudan and Union Public Service Commission. She was an IAS officer of 1983 batch from Andhra Pradesh cadre, retired as the Secretary of Ministry of Home and Foreign Welfare in July 2020, served as the Secretary of Department of Food and Public Distribution. Recently, the chairman is Preeti Sudan and the headquarters of UPSC is in New Delhi. Next is Robert Keith Rai. He has been appointed basically Canada ambassador to the UN, elected president of United Nations Economical and Social Council. So as we all know that there are 6 organ of United Nations. 6 principal organs है, out of which Economical and Social Council is one of the organ. So अभी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल के 1 साल के लिए जो चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं वो है रॉबर्ट कीथ. ही रिप्लेस पोला नरवेज. तो पोला नरवेज वाज द प्रीवियस चेयरमैन ऑफ United Nations Economical and Social Council. Now Robert Keith became the new chairman. Clear? Who is the vice president of ESOCOM, United Nations Economical and Social Council? Lok Bahadur Thapa of Nepal from Asian Pacific. And then KS of Poland belongs to Eastern Europe. Basically, he represents Eastern Europe. And Martija Chen from Costa Rica, she represents Caribbean states. About ESCOM, one of the UN 6 main organ or body responsible for coordination the work of the UN International Development System, and there are total 54 members of the Economical and Social Council. Next is news related to the acquiring and merger. So CCI, Competitive Commission of India, recently approved the merger of NCFL with PPL and acquiring of share in MCFL by ZMPPL. So recently, the Competition Commission of India has approved the proposal amalgamation of Mangalore Chemical Fertilizer with Paradeep Phosphate Limited, and it also acquires the MCLF equity share by Zuari Maros Phosphate Private Limited. Clear? The proposed combination amalgamation of MCFL with N into PPL Phosphate Private Limited and acquiring of 3920600 equity share of MCFL from Jekyll by ZMPPL. Clear? Here are some points related to these basically organization. So PPL is under the Advanced Group with the majority sharehold held by ZMPPL. ZMPPL is a 50:50 joint venture between Zuari Agrochemical Limited and OCP SA. Both PPL and MCFL are engaged in producing and marketing complex phosphate fertilizer. तो ये fertilizer basically organizations है. Clear? Next is CCI approved acquiring of 100% share of Vitair by Bunch. The Competition Commission of India has approved the acquiring of 100% share capital of Vitaira Limited by Banja Global SA.
Vitera main shareholder will receive Bunch stock resulting in minority stake in Bunch. Clear? So here are some key points related to the CCI or Bunch organization. The Bunch Global SE is a global agri-business and food company which headquarters is in St. Louis, Missouri, USA. Vitera Limited is a Canadian grain handle business focusing on purchasing and selling unprocessed commodity crops. Next is sports news. Indo-French tennis partner Yuki Bhambari and Albano won the 2024 Swiss Open G-Starred men's double. So मेंस डबल क्या होता है बेसिकली, जिसमें दो मेंस खेलते हैं अलग अलग तरफ से, दो इस एक तरफ होंगे, दो एक तरफ होंगे. तो इंडिया की तरफ से युक्ति भमारी और फ्रेंच पार्टनर थे इनके अल्बानो. अभी उन्होंने 56 स्विस ओपन गेस्ट हेड जीत लिया है. दे डिफीटेड ऑल फ्रेंच डुओ यूगो हम्बर्ट एंड फैब्रिक मार्टिन इन द फाइनल इवेंट. This is the second ATP Tour title of the year for Bhambari and Olivetti. तो इनका ये second title है. Bhambari has won 3 ATP title in total and Matthew Bertani won the Swiss Open Gstaad 2024 man single title. तो singles में तो मैथ्यू ने जीता है and basically men's double में यूकी भंबारी और अल्बानो ने इस टाइटल को जीता है. Next is important day news. We do celebrate World Lung Cancer Day basically on 1st of August. And the theme for 2024 is Strong Together United for Lung Cancer Awareness. So here is an organization which basically work for the lung cancer, about International Organization for the Study Lung Cancer. It was founded in 1974. President is Dr. Paul, the CEO is Dr. Karen, and the headquarters is in USA, Colorado. Next is Muslim Women Right Day 2024. On every 1st of August, we do celebrate Muslim Women Right Day 2024 to basically protect the right of the Muslim women. About the Ministry of Minority, Union Minister is Kiran Rijiju and the constituency is in Arunachal Pradesh and Ministry of State is George Kurian. Next is World FinTech Day 2024. Every year on 1st of August, we do celebrate World FinTech Day. The World FinTech Day is observed annually on 1st August to raise awareness about the importance of FinTech in modernizing financial service. The date commemorates the death anniversary of Cosimo de Medici, who is known as the father of the modern banking system. What is FinTech? Integrated technology innovation in financial services aimed to democratize financial and provide equal access to the financial services. These basically under FinTech, the services or technology used like AI, blockchain, and data analytics. Next is state news. Recently, Karnataka approved to rename Ramnagar district as Bangalore South district. So in July 2024, Karnataka government basically renamed the Ramnagar district as the Bangalore South district under brand Bangalore. The district include Ramnagar, Magadi, Kanakpura, Channapatna and Horahalli talukas. तो ये कुछ तालुकास थे जो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं. Basically, what is the background of the changing of the name? A delegation led by Deputy Chief Minister D.M. Shivkumar submitted the proposal to CM Siddharamaiah and the proposal was introduced in October 2023. Next is Gujarat unveil GRIT. What is GRIT? Gujarat State Institute for Transformation. Basically, GRIT क्या है? एक टाइप का think tank है which modeled after the Niti Aayog, National Institute for Transforming India. So Gujarat unveiled GRIT, a new era in state level policy making. तो एक think tank है जो गुजरात के डेवलपमेंट के लिए क्या बनाएगा? पॉलिसीज बनाएगा. So इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया था, अनाउंस किया गया था ड्यूरिंग नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल मीटिंग विच इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. And the last news is related to the award and recognition. So recently, Google CEO Sundar Pichai honored with honorary doctorate from IIT Kharagpur. तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर ने अभी सुंदर पिचाई को डॉक्टरेट की उपाधि दी है, टाइटल दिया है. The ceremony held in San Francisco marked a significant milestone in their career and highlighted the global impact of Indian Premium Technology Institute. And the last news is Nelson Mandela Legacy Sites inscribed as UNESCO World Heritage Sites.
तो अभी पता है कि भारत में न्यू दिल्ली में 46 यूनेस्को की मीटिंग हुई थी, जिसमें 26 और 24 साइट्स को शामिल किया गया था। ये 46 सेशन था। तो इसमें क्या किया गया है, South African site associated with Nelson Mandela has been inscribed at the World Heritage Sites by यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो दिल्ली की मीटिंग में जो साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला से रिलेटेड साइट थे, उनको अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। क्लियर? So these are the news we have covered, these important news. I hope you understand this session. Thank you.